We go into the next category, and that is about compounds of sulfur. Now when you talk about compounds of sulfur, the very first is we talk about sulfur dioxide, that is SO2. ठीक है, one of the most common compounds of sulfur. अब इसमें पहले शुरुआत करते हैं हम लोग प्रिपरेशन से. So the preparation are various ways of preparing SO2. सबसे पहला most easiest one, and that is combustion of sulfur powder results in sulfur dioxide. Combustion का मतलब क्या होता है? Heating in presence of air. So S plus O2 giving you what? SO2. It is as simple as that. Okay. Next one is there is a possibility that we take Na2SO3. Okay, that is sodium sulfide. This we are going to treat it with say sulfuric acid. So as a result of which हमें क्या मिलेगा? Na2SO4 plus H2O plus SO2. Okay, so this is the way sulfur dioxide can be prepared. Okay, by what? Using sulfite. Okay, तीसरा है, and that is we can use it during the process of roasting. Roasting of sulfide ores. So we have ZNS plus O2, that is going to give you ZNO plus SO2. Okay, उसी तरीके से iron pyrite है FeS2 plus O2, that is going to give you Fe2O3 plus SO2. Okay, so these are the methods. One, direct combination with oxygen, or we say combustion of sulfur, that is going to give you sulfur dioxide. फिर हम बना सकते हैं उसको from sulfides, treating with acid, that is H2SO4, so as a result of which sulfur dioxide gas can be produced. Next one is roasting of sulfide ores, तो उसके जरिए हम लोग zinc sulfide, that is इसको हम लोग ये भी बोलते हैं zinc blend. Okay, which is a very important ore of zinc. Iron pyrite, that is FeS2, so usse we can prepare sulfur dioxide. Alright, next thing is we go into the physical properties. दोस्तों physical properties की जब हम बात करते हैं तो first one is it is a colorless gas. Okay, very irritating odor. Okay, या फिर हम उसको ऐसे भी बोलते हैं it is a suffocating odor. It is acidic in nature. क्यों acidic? Because SO2 in presence of water is going to give you H2SO3, और इसको हम लोग बोलते हैं sulfurous acid. Okay, so first point, colorless gas, irritating odor, or we call it as suffocating odor. Next one is it is acidic. Okay, it is soluble in water. Okay, and thereby it gives you what? Sulfurous acid. Okay, and because it is an acidic solution, and that's why we say that SO2 is going to be what? Acidic in nature. तो ये हो गया इसका physical properties, alright, of sulfur dioxide. So I hope you have understood up to this. तो हम chemical properties के बारे में बात करेंगे. Now, before chemical properties, जो एक particular factor है जो इसको directly नहीं लेकिन indirectly affect कर सकता है, that is the change in the physical state. तो वो मैं आपको बताना चाहता हूँ. Generally क्या होता है कि SO2 is in the gaseous state. It can be converted into a liquid state, okay, at room temperature and at around say 2 atmosphere pressure. अब ये जो liquid state है, that is going to freeze at around 200 Kelvin and boil at around 263 Kelvin. Okay, ये याद रखना आपको, that is a change of phase, and then that liquid is freezing, so it is getting converted to solid, and then it is getting converted once again into the vapor state. Okay, तो ये change of physical transition होता है, change of phase होता है, and indirectly it might affect the chemical properties as well. So when we start with the chemical properties, some of the most common chemical properties that we are going to discuss over here, and that is, first one is SO2 is being treated with chlorine. Chlorination होगा in presence of charcoal. It gives you SO2Cl2. This is called as sulfuryl chloride.
ओके क्या बोलेंगे इसको? सल्फ्यूरिक क्लोराइड। कोई स्टूडेंट्स बोलता है सर थायोनाइल क्लोराइड, थायोनाइल क्लोराइड इज SOCl2, ये SO2Cl2 इसलिए सल्फ्यूरिक क्लोराइड। नेक्स्ट वन इज So2 undergoes oxidation resulting in the formation of SO3. This is taking place in presence of V2O5 as a catalyst. Okay, next one is SO2 reacts with NaOH and that is going to give you nothing but Na2SO3 plus H2O, that is it gives you sulfide. Okay, Na2SO3 मतलब sulfide मिलेगा आपको। Next one is Na2SO3 के साथ भी वो react करता है in the aqueous medium and it is going to give you nothing but what? NaHSO3. This is called as sodium bisulfite. Okay, इसे हम लोग क्या बोलते हैं? सोडियम बाइसल्फाइड या फिर हम बोलेंगे सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड। ओके, नेक्स्ट थिंग इज इट्स रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी के बारे में हम बात करेंगे। वी टॉक अबाउट द रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी। So one of the most common reducing property that can be considered is we have Fe3 plus being reacting with SO2 in the aqueous medium, that is H2O, and that is going to give you Fe2 plus SO4 2 minus, and then we got H plus ions. तो Fe3 plus का Fe2 plus हो गया है, so that means चार्ज कम हो गया, that means रिडक्शन हुआ है, दूसरे सब्सटेंस का रिडक्शन हुआ है और इसलिए सल्फर डाइऑक्साइड विल बिहेव एज अ रिड्यूसिंग एजेंट। ओके, उसी तरीके से दोस्तों जब हम बात करेंगे अबाउट KMnO4, KMnO4 is a very good oxidizing agent. It reacts with SO2 in presence of H2O, so it gives you K2SO4 plus MnSO4 plus H2SO4. तो डीकलराइजेशन होता है इस रिएक्शन की वजह से। KMnO4 का कलर आपको मालूम है, इट्स वायलेट, इट्स पर्पल। ओके, देन इट बिकम्स व्हाट? कलरलेस। सो दिस इज एन इंडिकेशन दैट KMnO4 अंडरगोज रिडक्शन। ओके, ये एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ऑलराइट, यानी दूसरे का ऑक्सीडेशन होगा, खुद का रिडक्शन होगा। एंड SO2 यहाँ पर विल बिहेव एज अ रिड्यूसिंग एजेंट। जैसे एक एसिड के साथ हमेशा बेस रिएक्ट करता है, वैसे ही एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ एक रिड्यूसिंग एजेंट रिएक्ट करता है। दो रिड्यूसिंग एजेंट साथ में रिएक्ट नहीं करते, दो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट साथ में रिएक्ट नहीं करते, ये याद रखिएगा आप लोग। सिमिलरली आई गॉट आयोडीन, दैट इज I2, इट इज गोइंग टू रिएक्ट विद द एक्वियस SO2 and it is going to give you Hi plus H2SO4। यहाँ पर भी आप देख सकते हो आयोडीन इज 0 और यहाँ पर उसका चार्ज है माइनस, सो दैट मीन्स 0 to माइनस, चार्ज कम हुआ है तो रिडक्शन है एंड देयरफॉर SO2 बिहेव्स एज अ रिड्यूसिंग एजेंट। ओके, सो दीज आर द रिएक्शंस विद रिस्पेक्ट टू व्हाट? सल्फर डाइऑक्साइड, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड। ऑलराइट, अभी जहाँ तक उसका स्ट्रक्चर का सवाल है, व्हेन वी टॉक अबाउट द स्ट्रक्चर में पहला बोलना इट इज हैविंग एन एंगुलर स्ट्रक्चर। यहाँ पे सल्फर का sp2 हाइब्रिडाइजेशन है, उसका जो बॉन्ड एंगल है दैट इज 119 डिग्री एंड देयर इज प्रेजेंस ऑफ वन लोन पेयर। ओके, द रिएक्शन सॉरी द स्ट्रक्चर कैन बी शोन लाइक दिस। ओके, या फिर हम उसे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर भी बता सकते हैं, so we can show it in this way. In this structure, the double bond is on one side. Okay, अब ये जो double bond है, that is nothing but a d pi p pi interaction. इसका मतलब क्या हुआ? The p orbital of oxygen overlaps with the d orbital of the vacant d orbital of the sulfur. Okay, and it is pi bonding. मतलब it is not involved in hybridization. अगर वो hybridization में involved होता, तो obviously it would have resulted in what? A strong sigma bond. Okay, plus उसके पास एक लोन पेयर है। ओके, सिमिलरली यहाँ पर भी वैसा ही है, देयर इज वन लोन पेयर और यहाँ पे जो बॉन्डिंग है दैट इज गोइंग टू बी अ d pi p pi ओवरलैपिंग। और जो मैंने बोला है आप लोगों को कि बॉन्ड एंगल इज 119 डिग्री। ओके, सो वन लोन पेयर, एंगुलर स्ट्रक्चर, 119 degree is the bond angle, and the double bond which is there, which is of course a pi bond, that is going to be nothing but d pi p pi. Okay, so these are called as resonating structures.
ओके, अब जब दोनों को कंबाइन कर देंगे तो ऑब्वियसली वी कॉल इट एज रेजोनेंस हाइब्रिड। ओके, सो दिस आर बेसिकली कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स और वी कॉल इट एज रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। ओके, और दूसरी बात मैं आपको बताना चाहता हूँ यहाँ पर कि यहाँ पर कोई भी सिंगल इलेक्ट्रॉन नहीं दिख रहा है आप लोग को, इसका मतलब ऑल द इलेक्ट्रॉन्स आर पेयर्ड, और अगर ऑल द इलेक्ट्रॉन्स आर पेयर्ड देयरफॉर SO2 मॉलिक्यूल इज डायमैग्नेटिक इन नेचर। ओके, तो ये था as far as the structure of SO2 is concerned. Okay, I guess you have understood up to this. Hence, the last part of the sulfur dioxide molecule is we will talk about the uses of that. Okay, so the uses of sulfur dioxide. Point number one is it is used in the process of refining of sugar as well as petroleum. ओके, रिफाइनिंग मतलब रिमूवल ऑफ इम्प्योरिटी। ओके, ये प्रोसेस है। तो शुगर और पेट्रोलियम को रिफाइन करने के लिए वी आर गोइंग टू यूज सल्फर डाइऑक्साइड। नेक्स्ट वन इज इट इज यूज्ड एज अ डिसइंफेक्टेंट। ओके, यानी नॉन लिविंग टिश्यूज पे अगर किसी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का ग्रोथ हो रहा है तो उसको मार देता है, या तो उसका जो ग्रोथ है उसको थोड़ा स्टडी कर देता है, स्टॉप कर देता है। सो आइदर स्टॉप्स द ग्रोथ और किल्स the microorganisms, so that is called as disinfectant. Next one is they are also used as preservatives. ज़्यादा करके edible जो foods होते हैं तो उस पर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स अटैक ना करें, ओके, और उसको पोल्यूट ना करें, एडल्टरेशन जिसे बोला जाता है, तो उसके लिए जिस पर्टिकुलर सब्सटेंस का इस्तेमाल किया जाता है दैट इज कॉल्ड एज व्हाट, प्रिजर्वेटिव। नेक्स्ट वन इज इट इज यूज्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। Sulfuric acid we will be discussing very shortly in this particular chapter. The name of that particular process is called as contact process. Okay, so manufacture of sulfuric acid by using contact process. Next one is it can be also used as a bleaching agent, removal of stains. Okay, that is going to be done by means of the sulfur dioxide. Next one is नॉन एक्वियस सॉल्वेंट की तरह वो काम कर सकता है। सॉल्वेंट, यू नो वेरी वेल, अ सब्सटेंस हैविंग एन एबिलिटी टू डिसॉल्व अदर सब्सटेंस इज कॉल्ड एज व्हाट, सॉल्वेंट। तो सबसे पहले हमारे दिमाग में क्या आता है, वाटर। लेकिन वाटर एकमात्र ऐसा सॉल्वेंट नहीं है दूसरे सब्सटेंस को डिसॉल्व कर सकता है। वाटर के अलावा भी बहुत सारे सब्सटेंसेस हैं और उसको हम लोग क्या बोलते हैं, नॉन एक्वियस सॉल्वेंट। सो लिक्विड सल्फर डाइऑक्साइड, ओके, याद रखिएगा लिक्विफिकेशन, मैंने आप लोग को इसके बारे में बताया था कि लिक्विफाइड होता है वो, ओके, एट रूम टेम्परेचर 2 atmosphere प्रेशर, इफ यू कैन रिमेंबर दिस। सो नॉन एक्वियस सॉल्वेंट इट कैन बी यूज्ड इन द लिक्विड फॉर्म ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड। So these are the uses of sulfur dioxide, okay, and in this way we have started with the preparation of sulfur dioxide, then we talk about the physical properties, the chemical properties, the structure, and finally we talk about uses, okay, and I'm very sure आपको ये sulfur dioxide का concept समझ में आ गया होगा। अब शुरू करते दोस्तों, बहुत ही important compound है सल्फर का और वो है सल्फ्यूरिक एसिड। ओके, नाम तो सुना ही होगा आपने। It is also called as king of chemicals because it is being used on a very large scale. तो अंडर कंपाउंड्स ऑफ सल्फर, ये दूसरा कंपाउंड हम लोग पढ़ाई कर रहे हैं। एक ऑलरेडी हो चुका है दैट इज सल्फर डाइऑक्साइड। नाउ वी आर गोइंग फॉर सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड जैसे आप सभी लोग जानते हो, द फॉर्मूला इज H2SO4। तो पहले शुरू करते हैं हम लोग प्रिपरेशन से। प्रिपरेशन में दोस्तों द प्रोसेस दैट वी आर गोइंग टू यूज, मैंने थोड़ी देर पहले जिक्र किया था इसका, एंड दैट इज कॉन्टैक्ट प्रोसेस। ओके, तो उसका अलग अलग स्टेप्स है। स्टेप नंबर 1, फॉर्मेशन ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड। सो आइदर कंबशन ऑफ सल्फर गिव्स यू सल्फर डाइऑक्साइड, या फिर रोस्टिंग ऑफ सल्फाइड ओर इज गोइंग टू गिव यू सल्फर डाइऑक्साइड। ठीक है, ये हो गया स्टेप नंबर 1, फॉर्मेशन ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड। स्टेप नंबर 2, ऑक्सीडेशन ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड टू सल्फर ट्राइऑक्साइड। अब इसमें दोस्तों SO2 plus O2 gives you SO3. Delta H is going to be around minus 786 kilojoules per mole. Reaction is रिवर्सिबल। ओके, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है।
और आपको मालूम है according to Lee-Chatterjee's principle exothermic reaction है, the energy is liberated, alright? So कोई भी चेंज है तो उस चेंज को कैंसिल करना है, तो अब इसी टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो और फिर टेम्परेचर बढ़ेगा, सो द टेम्परेचर हैज टू बी व्हाट डिक्रीज्ड. सो एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, लो टेम्परेचर इज फेवरेबल एंड दैट इज गोइंग टू बी अराउंड 720 केल्विन. नेक्स्ट वन इज इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन. अगर आप देखो गौर से तो व्हाट हैपेंस इज this is 2 volume, this is 1 volume, so it is 3 volume and this is 2 volume, so it results in a decrease in volume. Agar volume decreases, so there will be an increase in the pressure and that is going to be 2 atmosphere pressure. Okay, तो ये required condition है दोस्तों. Okay, because the reaction is exothermic, so low temperature and high pressure is going to be favorable and the reaction will take place in presence of vanadium pentoxide, which will behave as a catalyst. Okay, वो किसके जैसा behave करेगा? Catalyst के जैसा behave करेगा. Next one is the sulfur dioxide जो हमें मिला है, so absorption of sulfur dioxide by sulfuric acid and it gives you oleum. Okay, वो क्या देगा आपको? Oleum देगा. So SO3 plus H2SO4, it results in the formation of H2H2O7. Okay, this is what oleum is, and then we say dilution of oleum. We have discussed this under oxo acids of sulfur as well. So dilution of oleum करेंगे, so you get H2H2O7 plus H2O, and it gives you 2H2SO4. और इसका जो purity level है, that is 96 to 98% pure. Okay, so these are the different steps involved in the entire process. मैं आपको वापस से रिकैप करके दे देता हूँ. We are talking about manufacture of sulfuric acid and industrially the most useful process which is being carried out on a large scale और वो है contact process. तो उसके अलग अलग स्टेप्स है. तो स्टेप नंबर 1 में हम सल्फर डाइऑक्साइड पहले प्रिपेयर करेंगे. अलग अलग तरीका है उसका प्रिपेयर करने का. नंबर 1, या तो डायरेक्टली कंबशन हो जाएगा सल्फर पाउडर का तो आपको सल्फर डाइऑक्साइड मिलेगा, या फिर आयन पाइराइड्स और लो ओके और उसको रोस्टिंग करो, मतलब हीटिंग इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, तो इट गिव्स यू सल्फर डाइऑक्साइड. सेकेंड स्टेप में सल्फर डाइऑक्साइड का ऑक्सीडेशन करते हैं तो सल्फर डाइऑक्साइड मिलता है. अब ये रिएक्शन स्लो रिएक्शन है इसलिए हम लोग उसको रिवर्सिबल बोलते हैं. ओके इसलिए इस रिएक्शन की गति को बढ़ाने के लिए हम कैटलिस्ट का इस्तेमाल करते हैं. कैटलिस्ट जो इस्तेमाल किया है वो है V2O5. ओके रिएक्शन एक्सोथर्मिक है इसलिए लो टेम्परेचर का इस्तेमाल करते हैं, तकरीबन 720 केल्विन. द रिएक्शन प्रोसीड होता है फॉरवर्ड डायरेक्शन में तो वॉल्यूम में कमी आती है. सो हाई प्रेशर इज गोइंग टू बी यूज्ड, दैट इज अराउंड 2 एटमॉस्फेयर, so that more and more amount of sulfur dioxide is formed. This sulfur dioxide which is formed is absorbed by H2SO4. ओके ऑलरेडी हमारे पास सल्फ्यूरिक एसिड है तो वो इसको एब्जॉर्ब कर लेगा तो आपको ओलियम देगा और फिर लास्ट में ओलियम को डाइल्यूट कीजिएगा. ओके तो यू गेट अराउंड 96 to 98% प्योर सल्फ्यूरिक एसिड. Okay, so these are nothing but the steps involved in the manufacture of sulfuric acid by which process? Yes, you guessed it right. It is contact process. Now next thing is we talk about the physical properties. पहला है it is a colorless liquid, it is oily and it is dense. इसका specific gravity is 1.84 grams per cm cube at 298 Kelvin. उसका जो freezing point है that is going to be around 283 Kelvin and जो boiling point है that is around 611 Kelvin. highly corrosive है ये and therefore it produces severe burns on hand. Okay, this is all the physical properties. was self explanatory है, colorless है, liquid है, oily है वो और dense है. उसका density is high as compared to that of water. Water का density is considered as 1, इसका 1.84 है, मतलब almost twice. Okay, 1.84 है 298 कैलोरी, इसलिए तो हम उसको बोलते हैं dense.
Okay, and it is oily. The reason is oily का मतलब होता है it is not going to be easily miscible in water. Okay, यानी अगर उसको मुझे miscible करना है तो I need to add large quantity of water, then only it is going to be miscible and forms one layer. Otherwise it is oily. Oily का मतलब immiscible. उसका freezing point is going to be around say 283 Kelvin. Boiling point is going to be around 611 Kelvin and it's highly corrosive. यानी अगर skin पे हुआ, okay, hand का मतलब होता है we talk about basically skin. या talking about skin पे अगर वो गिरा तो फोड़े फोड़े हो जाएंगे और severe burning होगा. Alright, so you need to visit the doctor and then all the procedures has to be carried out. Okay, first aid procedures has to be carried out. So you need to be very clear when you are going to handle concentrated sulfuric acid that you are going to use utmost care. Okay, gloves, okay, face shield and etc to make sure that you are completely being protected from the corrosive action of sulfuric acid. Alright, so these are the important points with respect to the physical properties of sulfuric acid. I am sure आपको समझ में आ गया होगा. Now my dear friends, once we have understood the preparation and the physical properties, we now go into the chemical properties of sulfuric acid. Chemical properties में दोस्तों पहला तो है acidic properties. Sulfuric acid in presence of water dissociates to give you H3O plus and HSO4 minus. इसका Ka value is greater than 10. Next one is HSO4 minus. Once again in presence of water gives you a hydronium ion and SO4 minus. यहाँ पर Ka का value है around 1.2 into 10 raised to minus of 2. Okay, now यहाँ पर very clear है कि the Ka value is going to be high and therefore we say that H2SO4 is a strong acid. Okay, and also the release of the first proton is much easier as compared to the release of the second proton. Okay, this is also can be concluded from this particular observation. Alright, the next point that we are going to talk about after the acidic one, and that is going to be nothing but the reaction with metals as well as non-metals. With metals and non-metals. तो मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कॉपर का. कॉपर is being treated with sulfuric acid. This is hot as well as concentrated. Sulfuric acid हम यूज करेंगे तो we get CuSO4 plus SO2 plus H2O. Okay, sulfur dioxide gas is going to be released. अगर मैंने समझो सल्फर के साथ उसको ट्रीट किया S plus H2SO4 तो आपको देगा SO2 plus H2O. अगर मैंने उसको कार्बन के साथ ट्रीट किया सल्फ्यूरिक एसिड को तो आई गेट CO2 plus SO2 plus H2O. ओके, एवरीवेयर इट इज हॉट एंड कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड. ओके, ये मेटल है और ये दोनों क्या है, नॉन मेटल. सो इट विल रिएक्ट विद मेटल्स एज वेल एज नॉन मेटल्स. नेक्स्ट वन इज उसका डिहाइड्रेशन प्रॉपर्टी है. Dehydration is all about removal of water. So it removes water, okay, from sugar, leaving behind sugar charcoal. Okay, black color का हो जाता है फिर. Okay, and this is called as charring process. Okay, क्या बोलेंगे इसको, charring process. So C12 H22 O11, okay, plus sulfuric acid, or we can just write down like this without giving the nascent oxygen. Sulfuric acid is used as a medium, so as a result of which you get C plus H2O. So this is that charcoal that we are talking about. Okay, sugar charcoal, and water is going to be removed. Removal of water is dehydration. Alright, and this is black in color. तो देखो अब आप एक एक्सपेरिमेंट भी कर सकते हो. अगर आपने शक्कर लिया और उसमें कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड डाला तो वो काला हो जाएगा because of what, formation of carbon and all the other things is going to be removed. So this is about dehydration. तो तीन प्रॉपर्टीज अब तक मैं बता चुका हूँ आप लोग को. फर्स्ट वन इज एसिडिक प्रॉपर्टी. द सेकंड वन इज गोइंग टू बी अ रिएक्शन विद मेटल्स एज वेल एज नॉन मेटल्स. ओके, यहाँ पर देखिए कॉपर का चार्ज 0 है, यहाँ पे कॉपर का चार्ज +2 है, यहाँ पे सल्फर का चार्ज है 0, यहाँ पे सल्फर का चार्ज +4 है, यहाँ पे कॉपर का चार्ज है 0, यहाँ पे कॉपर का चार्ज है +4. सो देयरफॉर वी से दैट सल्फ्यूरिक एसिड बिहेव्स एज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट.
Okay, it behaves as an oxidizing agent, and then as I told you, it's also behaving as a dehydrating agent. I hope you have understood up to this part. Next property, my dear friends, that we are going to discuss, and that is reaction with salts. Reaction with salts. So I talk about NaCl and sulfuric acid. So one of the H will be removed and it will go with HCl, and we have NaHSO4. Next is KNO3 plus sulfuric acid. Similarly, one H will go with NO3, it will give you HNO3, and plus you get potassium hydrogen sulfate. This is sodium hydrogen sulfate. Calcium fluoride plus sulfuric acid, that is going to give you calcium sulfate and HF. Okay, so these are nothing but all the salts which is going to react with sulfuric acid, and as a result of which, okay, you get these particular compounds. So this is the fourth category. Okay, when you talk about chemical properties, first one was acidic property, second one was reaction with metals, non-metals, then we talk about dehydrating property, and then the last one is the reaction with salts. Now we go into some of the important part, and that is the uses. As I said, it is the king of chemicals, so it has been used in variety of industries. So we start with the first one. It is used in the fertilizer sector. Okay, I can give you an example of, say, ammonium nitrate, ammonium chloride, ammonium sulfate. Okay, these are some of the compounds which can be formed by making use of sulfuric acid. Next one is, they are used in storage batteries. Okay, they are reversible batteries, so they can be charged as well as discharged. Okay, and therefore the efficiency increases. Next one is, they are used in the petroleum industries, in the refining process. Petroleum has been made up of various fractions corresponding to various temperatures. So sulfuric acid has a role to play in that, to separate all those different fractions depending on temperature. Next one is, they are used as a laboratory reagent. One of the most important laboratory reagent, a chemical lab will be absolutely considered as incomplete without sulfuric acid. It is used as detergents, so it has got a very cleansing action. The sulfuric acid group is present in detergents, and that is going to help in cleaning of the clothes which are going to be filled with stains. Then they are used in pigment, dye stuff, and paint industries. In the metallurgy process, they are used for cleaning of metals. Also, they are used in electroplating, coating of metal or any substance on the surface of another substance by a process of electrolysis. So that is electroplating. The other one is galvanizing. Galvanizing मतलब specifically coating of zinc on any metal. Electroplating में क्या होता है? You can coat any metal or any substance on the surface of another substance through the process of electrolysis. तो हम लोग उसको बोलते हैं electroplating. लेकिन galvanizing में क्या करते हैं? हम specific बात करते हैं, and that is coating of zinc. Okay? It can also form. It is used in the preparation of nitrocellulose compounds, which are going to be used in various industries. So these are some of the uses of sulfuric acid, basically used everywhere, and that's the reason we say that they are also called as what? King of chemicals. Okay, so this is all about, I guess you have understood about sulfuric acid the way I have tried to project in front of you. Alright, the first is, the most important one is the preparation of sulfuric acid by means of contact process. Then we talked about physical properties and the chemical properties, and finally we talk about its uses. Alright, as far as the structure is concerned, I have already discussed with you all under the heading of oxo acids of sulfur. Alright, so I hope you have understood these points very clearly.